Next is interface of financial policy and the strategic management. The interface of the strategic management and the financial policy will be clearly understood if we appreciate the fact that the starting point of the organization is money and end point is also money. यानी बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो कंपनी को पैसा देता है, कंपनी उससे बिजनेस करता है, कंपनी ने बिजनेस से रिटर्न कमाया और वो शेयर होल्डर्स को वापस दिया जाता है. No organization can run an existing business and promote an expansion without a suitably internally mobilized financial base or both. Internally and externally mobilized financial base. Sources of the finance and capital structure are most important dimensions of a strategic plan. The need for the fund mobilization to support the expansion activity of the firm is very vital for any organization. The generation of the funds may arise out of ownership of the capital and or borrowed capital. Means of the financing, ownership जिसमें इक्विटी आएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ पे लिखा है. बोरोइंग में शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म में पब्लिक डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट. So interface between the financial policy and the strategic management. The starting point of an organization is money and end point of an organization is also money. The fact must be appreciated so that the interface of the strategic management and financial policy will be clearly understood. Interface include further important points. Debt to equity ratio, any proportion of the debt in the capital structure. Investment and the fund allocation decision. Dividends, there is dividend policy. There are some norms for debt equity ratio which need to be followed for the minimum risk for excessive loan. So ज़्यादा debt financing से क्या होगा, bankruptcy का risk होता है. ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग से क्या होगा, लेट्स से द कंपनी इज हैविंग अ रिस्क ऑफ लेट्स से इट मे not be able to make the payment to the fund providers and the company so will be closed down. ऐसा risk है. For instance, in case of the public sector organization, the norm is 1:1 ratio, and for the private sector firm, it is 2:1 ratio. It also depends upon the planning mode of the organization. For capital intensive industries, the proportion of the debt to equity is much higher. Similar is the case for the high cost projects in the priority sectors and for the projects in underdeveloped regions. So ये जो proportion है से वो capital intensive industries के लिए अलग होता है, जिसमें you are allowed to raise such substantial debt financing. और हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी से दिस इज डिफरेंट. डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज द डेट फाइनेंसिंग इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी फाइनेंसिंग. इन्वेस्टमेंट एंड फंड लोकेशन डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजटिंग का वापस बात कर रहे हैं. अ प्लानर हैज टू फ्रेम द पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट एंड फॉर रीस्टेनिंग ऑफ करंट एसेट्स. Investment proposals mooted by the different business units may be divided into 3 groups. One type of the proposal will be for the addition of a new product, यानी हम लोग नया टाइप का कोई बिजनेस शुरू करेंगे. Another type of the proposal will be increase in the level of the operation of an existing product, यानी expansion का बात कर रहे हैं. Existing product की हम लोग और कहीं पे जाके बेचेंगे through either an increase in the capacity of the existing plant
or setting up of an another plant for meeting the additional capacity requirement. दोनों इसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग का ही बात कर रहे हैं. द लास्ट इज फॉर द कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. हम लोग हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वो कुछ इस हिसाब से करें, सो वी विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड वी विल बी एबल टू से गेट द सेम थिंग. यानी हम लोग क्या करें, कुछ ऑटोमाइजेशन करें कि जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वी विल बी एबल टू मीट विद द सेल्स रिक्वायरमेंट promptly and we will be able to do better by reducing the cost, or we will be able to do same thing by reducing the cost of the resources through new approach and of closer monitoring of different critical activities. Now given these three types of the proposal, a planner should evaluate each one of them by making within the group that is comparison in the light of the capital budgeting exercise. In fact, the project evaluation and the project selection are the two most important jobs under fund allocation. So यहाँ पे वो लोग दो चीज का बात कर रहे हैं. So the project selection and project evaluation दोनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है. डिविडेंड पॉलिसी, जो भी हमने कमाया उसमें से कितना बिजनेस पे री इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. Dividend policy is a decision that deals with the extent of the earning to be distributed as dividend and extent of the earning to be retained for the future expansion scheme of the firm. From the point of view of the long-term funding of the business growth, dividend can be considered as a part of the total earning which cannot be profitably utilized by the company. Stability of the dividend payment is a desirable consideration that can give positive impact on the share prices. तो ये लोग क्या बता रहे हैं, let's say dividend may be considered as ये हम लोग effectively business में reinvest नहीं कर सकते. At the same time से हमको over a long period of time एक consistent dividend policy रखना चाहिए. The alternative policy of paying a constant percentage of the net earning may be preferable from the point of view of both flexibility of the firm एंड एबिलिटी ऑफ द फर्म. तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो भी हम लोग कमाते हैं उसमें से एक फिक्स प्रोपोर्शन का डिविडेंड पे करते रहेंगे. पर उस केस में फ्रेंड्स क्या होता है, उस केस में हमारा जो डिविडेंड का पेमेंट है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है. इन अ वे दैट से जितना कमाया उसमें से एक प्रोपोर्शन डिविडेंड को पे करना. तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा अर्निंग में कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से प्रैक्टिकली वो नहीं होता है कि एकदम कांस्टेंट अर्निंग ही हो, डिविडेंड का पेमेंट भी फ्लक्चुएट होगा. और दूसरा ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट से कुछ साल में अगर हमारा अर्निंग नेगेटिव है तो हम लोग डिविडेंड पे नहीं करेंगे. इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज ऑफ द लेसर रिस्क फॉर द इन्वेस्टर. Yet some other companies follow a different alternative. They pay a minimum dividend per share and additional dividend when the earnings are higher than the normal earning. So वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, let's say we may have like this. हम लोग कुछ पोर्शन का तो मिनिमम डिविडेंड पे करते ही हैं. We may pay higher than that but not lower than that. In actual practice, investment opportunities and the financial needs of the firm and the shareholders' preference for the dividend against the capital gain resulting out of the share are to be taken into consideration for arriving at the right dividend policy. तो ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट्स प्रैक्टिकली हमको और एक चीज भी कंसीडर करना चाहिए कि हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है ये पैसा री इन्वेस्ट करने का. दूसरा हमको ये भी कंसीडर करना चाहिए दैट्स द इन्वेस्टर्स का क्या प्रेफरेंस है, उनको डिविडेंड इनकम चाहिए या तो फिर हम लोग पैसा बिजनेस में रिटेन करें एंड दे गेट द कैपिटल एप्रिसिएशन. Alternatives like cash dividend and stock dividend are also examined while working out an ideal dividend policy that supports and promotes the corporate strategy of the company. तो हमको ये भी डिसाइड करना है let's say whether we should give them cash dividend or we may say capitalize our earning in a way that say we issue bonus shares to them. तो हमारा liquidity भी affect नहीं होगा and at the same time shareholders will be able to get the return
And if at all they want liquidity, then they can sell the investment in the secondary market. Thus, the financial policy of the company cannot be worked out in isolation of other functional policy. It has a wider appeal and a closer link with the overall organization performance and the direction of the growth. These policies being related to the external awareness of the firm, especially the awareness of the investors about the firm. In respect of its internal performance, there is always a process of the evaluation active in the minds of the current and the future stakeholders of the company. As a result, preference and that is patronage for the company depends significantly on the financial policy framework. Hence, attention of the corporate planners must be drawn while framing the financial policy is not a later stage but during the stage of the corporate planning itself. This is very difficult task compared to usual cause and effect study because the corporate strategy is the cause and the financial policy is the effect, and sometimes financial policy is the cause and corporate strategy is the effect. So interface of the financial policy and the strategy management. So starting is money and ending is money. Sources of the finance and capital structure are the most important dimension कि हम लोग कितना खुद का फाइनेंसिंग यूज करेंगे, कितना बाहर का यूज करेंगे. ओनरशिप का स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया हमको. Now this is important. Interface includes the further following points. ये हमको याद रखना पड़ेगा. The first is debt equity ratio. Second is the investment and allocation. And the third is the dividend policy. So पैसा लाने का, बिजनेस करने का और पैसा वापस करने का. These three things are there. डिविडेंड पॉलिसी उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बताया है. कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ द अर्निंग टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, देन मिनिमम डिविडेंड एंड इंक्रीज इन द डिविडेंड इफ एट ऑल द थिंग्स आर गुड, दैट इज जो साल में अर्निंग अच्छा हुआ है, या तो इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड वी कैन पे द बोनस शेयर्स. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड.